Here you can see in table 6.1 some common changes, and you have to fill up the table just by writing yes or no whether these changes can be reversed. क्या हम वापस जा सकते एक बार चेंजेस होने के बाद, जैसे कच्चा अंडा रॉ एग टू बॉइल्ड एग, कच्चे अंडे को बॉयल करके पकाने के बाद बॉइल्ड एग हो जाएगा, तो उसको वापस उसी रॉ एग के फॉर्म में ला सकते हो? नो. सो देयर यू राइट नो. बैटर टू इडली, मतलब जो खमीर होता है, बैटर जो इडली का बैटर होता है, उसमें से आप इडली बना लो. इडली बनाने के बाद फिर सोचो कि नहीं, आज तो इडली खाने वाले कोई नहीं है, चलो वापस हम उसको बैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या आप कर पाओगे? नो, इट्स नॉट रिवर्सिबल. वेट क्लोथ्स टू ड्राई, मम्मी ने आपको वॉशिंग मशीन में से कपड़े लाके या तो फिर धुले हुए कपड़े को सुखाने के लिए दिया. सूखे हुए कपड़े को फिर से गीला कर सकते हो? यस. ओनली वन थिंग यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ड्रेंच दोज क्लोथ्स अगेन इन वाटर. उसको आप फिर से गीला कर सकते हो. आप सिर्फ इतना आपको करना है, यू हैव टू टेक दोज क्लोथ्स, पानी में उसको भिगो दो या तो फिर डुबो दो, गीला हो जाएगा. सो देयर यू राइट यस. वूलन यार्न टू नीटेड स्वेटर. वूलन यार्न मतलब ऊन के गोले में से ऊन के धागे से आप स्वेटर बुनोगे. यू विल नीट द स्वेटर. अब स्वेटर गूंथने के बाद कहीं से ऐसा हुआ कि आपने एक बीच में से एक धागा काट लिया और फिर आप खींचने लगे, तो वो पूरा स्वेटर खुल जाएगा. तो आपको वो यार्न मिल गया, वुलन यार्न, यू गॉट इट. और उसको आप उनको फिर से आप गोले में कन्वर्ट कर दो, तो अगेन यू हैव गॉट वुलन यार्न. सो वुलन यार्न टू नीटेड स्वेटर, और नीटेड स्वेटर में से फिर से वुलन यार्न आपको मिल जाएगा. सो इट इज़ रिवर्सिबल. ग्रेन्स टू फ्लोर, अनाज को आटे में कन्वर्ट करो. क्या फिर उसी आटे में से वो अनाज वापस ले सकते हो? नो, इट्स इरिवर्सिबल. इसी तरह से कई ऐसे चेंजेस इसमें लिस्ट आउट किया गया है. यू जस्ट हैव टू रीड एंड राइट yes or no whether the changes are reversible or irreversible. If they are reversible, write yes. If not, then you write no. Now let's see, could there be other ways to bring a change? Actually, there are different types of changes: slow change, fast change, periodic change. So, changes are of different type, but here in your chapter they have covered one type, that is reversible change and irreversible change. Now we have to see whether there are any other ways to bring in change. Let's see. We all have seen the tools which are used to dig the soil. Have you ever seen how the iron blade is in these tools is fixed to the wooden handle? किस तरह से iron blade को wooden handle में fix किया जाता है? The iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed normally. The ring is slightly smaller in size than the wooden handle. To fix the handle, ring को गर्म किया जाता है. The ring is heated and it becomes slightly larger in size. It expands. Any object when becomes slightly larger in size on heating, then we call it expanding of that object. That's called, it expands. It's called expansion. Okay. Here you can see the ring. You can see this ring, metallic ring. The diameter of this metallic ring is kept little smaller than the thickness of the diameter of the wooden handle.
Then what is to be done? This metallic plate or the ring is heated red hot, and in that case what happens? The metallic ring expands. Then the wooden stick is or handle is inserted inside this ring, and then it is allowed to cool down, or it is put into a cold water so that forced cooling takes place, and again the iron ring comes back to its original size. So it gets fixed on the wooden handle tightly. So this is how the wooden handles are fixed inside the metallic ring. Whether it is the devices or the tools used by the farmers or the laborers, or it's about the wheel of the wooden cart, wooden wheel, to protect the wheel from wear and tear, a metallic rim is being put around the wooden wheel. You can see this, and how it is fixed so tight on the wooden wheel. Thing is that the diameter of the rim, metal rim, is kept little smaller than the diameter of the wheel, wooden wheel. Then it is heated, and after heating, what happens? The diameter of the metal rim expands, it increases, so it is easily put around the surface of the wheel, and after putting it, the wheel is, when it is set properly, then the metal rim along with the wooden wheel is put in cold water. So the metal rim which had expanded on heating contracts on cooling and comes back to its original size. So it gets fixed tightly on the wooden wheel. These wheels are used in the carts, bullock carts, or the carts which are drawn by animals, or the ferrywalas use the cart which run on 4 wheels. There also you can see the wheel, wooden wheel, has metal rim. सिर्फ इतना ही नहीं, you see the shape of these tools. See, different. Do you think they have been cut and made? No. They have been heated and then they are hammered, and this type of shapes have been obtained in these tools. You can see, and that's being done by blacksmith. ये लोहार, ये काम कौन करते हैं? ब्लैकस्मिथ, लोहार ये काम करते हैं. वो कोई टूल, औजार जब बनाते हैं तब उसको उनके भट्टी में अगर जाओगे तो देखोगे how does a blacksmith change a piece of iron into different tools. A piece of iron is heated till it becomes red hot. Once the iron becomes soft on heating, then it can be beaten into desired shape. मतलब उसको पीट के अपने हिसाब से जिस तरह का शेप आप चाहते हो उस हिसाब से आप शेप निकाल सकते हो. Finally, we find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substances. Heating तो हमने देख लिया. What about mixing it with some other substances? जैसे हमने एक ग्लास प्लेन वाटर लिया. अगर आपको चीनी का घोल चाहिए, if you want sugar solution, what you do? You mix sugar to the water and mix it, stir it, and you get sugar solution. The change you can see from water to a mixture of sugar and water that gives sugar solution. उसी तरह से नमक का घोल चाहिए तो instead of sugar you put salt, and again the water gets changed into a saline water. But are these changes reversible? Yes, they are reversible. But you have also talked about certain changes which are irreversible. So we also found that some changes can be reversed
while some others cannot be reversed. So there must be many other ways of changing things around us. We have, as I told you, there are many different ways or changes that takes place around us. अगर आप पेड़ पौधों को ले लो, हम लिविंग बींग्स को ले लो, हम कई साल पहले बहुत छोटे थे, जब लाइक यू आर इन एट प्रेजेंट 6th standard, if you take a photograph of yours near about 6 years back, then and you compare it with the current photograph, then you will find that you were too small that time. But changes have taken place, you have grown up. Same way, आसपास के पेड़ पौधों को देखो, छोटे छोटे प्लांट्स जो बारिश के मौसम में उगे या तो फिर आपने बोए हो, तो वो कुछ ही दिनों में बड़े हो जाते हैं. सो दीज आर नेचुरल चेंजेस. कुछ चेंजेस जो हमने किए तो वो आर्टिफिशियल मैनमेड चेंजेस होते हैं. जस्ट लाइक व्हेन यू स्विच ऑन अ फैन और लाइट, द स्टैंड स्टिल फैन स्टार्ट्स rotating, moving. So that's a man-made change. Same way, when you switch on light, the lamp glows. So again a man-made change. Fan, when you want to increase the speed of the fan, you just rotate the regulator, you just move the regulator to increase the speed of the fan. So fast change, slow change, like converting milk into curd, that's a slow change. Bursting a cracker, मतलब आग लगाया, फूट गया, explosion took place immediately, it's a fast change. So different types of changes can be seen around us, but then here in 6th standard we are only studying about reversible change and irreversible changes. So finally we have come to the end of the chapter, and here you can see the keywords: changes, contraction, evaporation, expansion and melting. What is melting? पिघलना. अब कैंडल को ले लो, फिर कैंडल को जलाओ, and you will find that, what will you find? You will find the height of the candle goes on decreasing, and you can see this type of molten wax going down, rolling down. So इसको कहते हैं पिघलना. जब वो मेल्ट हो जाता है, that is called melting. Even the ice melts when you remove the ice cube from the freezer and leave it like that in the room temperature, you will find that the ice cube starts melting. So that is called melting. When solid gets converted, starts getting converted to liquid form. इवापरेशन, जब वो भाप बन जाता है, वेपराइज हो जाता है. जैसे कि हमने पानी लिया, उसको गर्म करना शुरू किया, स्टार्टेड गिविंग हीट टू द वाटर, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, उबलना शुरू होता है. फिर बाद में आप देखोगे कि आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट द वाटर स्टार्ट्स वेपराइजिंग, इवापरेट होना शुरू हो जाता है. इसी तरह से कैम्फर को, कपूर को ले लो, फिर वो कपूरदानी आता है, इलेक्ट्रिकल कपूरदानी, उसके ऊपर रख दो एंड ट्राई टू विजुअलाइज. यू विल find that white fume like structure or white gases going up. What is that? That is vaporized camphor. Camphor मतलब कपूर. तो ये हुआ evaporation. पानी अगर कंपाउंड में गिर गया, within few minutes that compound is going to get, the floor of the compound is going to get dried up because the water gets evaporated, vaporize हो जाता है due to the heat of the sun, atmospheric heat. So that's what evaporation is. Expansion मैंने आपको समझा दिया, contraction वो भी आपने समझ लिया, और melting भी अभी मैंने आपको समझा दिया. So that's the end of chapter 6.